Hello everyone, my name is Shubhi and I'm your educator for child development and pedagogy. So in today's class, we are going to talk about socialization processes. Now, what is socialization? Socialization जिसको कि हम समाजीकरण भी बोलते हैं, उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह पढ़ते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति के जीवन में फ्रॉम हिज और हर बर्थ टिल डेथ चलता रहता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स that what actually socialization is. Okay, so let's try to understand what socialization is. Okay, socialization is the process through which individuals, typically in the context of a society or culture, learn and internalize the values, norms, beliefs, behaviors, and social skills necessary for effective functioning within the society. एक बहुत ही फेमस सेइंग है टेब्यूला रासा. ओके, which means blank slate. Okay, when a human is born, he is like a blank slate. वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है. सोशलाइजेशन या समाजीकरण वो प्रोसेस होता है जिससे कि वह व्यक्ति अपने समाज को समझता है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानता है, डिफरेंट सोशल स्किल्स सीखता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कैसे शेयरिंग सीखनी है. ये सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है, मंदिर में जाना है तो चप्पल उतार के जाना है, छोटी से छोटी चीज जो बच्चा है वो सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है. ठीक है, तो इसीलिए सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट सोशलाइजेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ब्लैंक स्लेट होता है जब बच्चा पैदा होता है. उसे अपने कल्चर का ज्ञान नहीं है, उसे अपनी सोसाइटी का पता नहीं है, उसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है, उसे अपनी फैमिली का पता नहीं है. ऑल दीज थिंग्स ही गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज family, from his school, from his teachers. So ये सब agents हैं जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे ये agents socialization प्रमोट करते हैं. सोशलाइजेशन होता है इन सारे एजेंट्स की वजह से, एंड किसी भी बच्चे के जीवन में सोशलाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है. नाउ the importance of socialization in child development cannot be overstated. Here are several key reasons why socialization is crucial. Socialization crucial क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं. Now, first point says formation of identity and self concept. Socialization का वो प्रोसेस है जो कि एक बच्चे को हेल्प करता है उसकी आइडेंटिटी को पहचानने में, थ्रू हिज फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी. जब बच्चा पैदा होता है उसे ये ज्ञान नहीं है कि वो किस फैमिली का पार्ट है, वो किस माँ का बच्चा है, वो किस पिता का बच्चा है, या वो किस कम्युनिटी का पार्ट है, किस रिलीजन का पार्ट है. बट जब वो धीरे धीरे अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आता है या सिग्निफिकेंट अदर्स के कांटेक्ट में आता है, तब जाके उसे ये ज्ञान होता है कि वो किस फैमिली का पार्ट है या किस सोसाइटी का पार्ट है. और ये सब चीजें वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही समझता है. Through interactions with others, they learn about their own identities, roles, and beliefs. Example के तौर पे, there are two children. एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, या एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है. अब थ्रू इंटरेक्शन ओनली उनको ये पता चलेगा कि ओके मैं बड़ा हूँ, या मैं छोटा हूँ, या मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, या ये मैं इनकी बेटी हूँ. इंटरेक्शन के थ्रू ये पता चलेगा, राइट? सो दैट इज हाउ socialization is very crucial for formation of identity and self-concept. Now, the second point says acquisition of social skills. Social skills मतलब ऐसे skills जो आपको सोसाइटी में एक बेहतर सोशल एनिमल बनने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जब इंसान पैदा होता है ही इज नॉट सोशल, ही बिकम्स सोशल थ्रू सोशलाइजेशन. ठीक है, socialization provides children with the opportunity to learn
and practice important social skills such as communication, cooperation, empathy, conflict resolution. जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना भी नहीं सीखता है, उसकी फैमिली जो है वो उसको धीरे धीरे चीजें बोल के बता के उसे हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज लर्निंग. ओके, आप अपनी मदर टंग कभी इंटेंशनली लर्न नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हिंदी स्पीकर, मेरी मदर टंग हिंदी है, मैंने कभी इंटेंशनली हिंदी सीखी ही नहीं, बट फॉर इंग्लिश आई हैड टू लर्न. एंड वो हिंदी वाली जो मदर टंग है वो आई बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन. आई कुड हैव दैट बिकॉज ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी वाज टॉकिंग इन हिंदी ओनली. राइट? सो ऐसे करके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, लैंग्वेज डेवलप होते हैं, कम्युनिकेशन करना आपको आता है. अगर किसी इंसान को बंद कर दिया जाएगा बहुत सालों के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम मोगली का एग्जाम्पल ले लेते हैं. मोगली का आप सबने स्टोरी सुनी होगी, एंड ही वॉज अ ह्यूमन चाइल्ड. वो एक इंसान का बच्चा था, बट स्टिल ही वॉज लिविंग लाइक अ जंगली एनिमल. जंगली एनिमल की तरह हो रहा है इन फॉरेस्ट. वाई? बिकॉज उसका सोशलाइजेशन एनिमल्स के साथ, वाइल्ड एनिमल्स के साथ. राइट? सो दिस इज हाउ important socialization is. Okay, now let's move to the next point, that is cultural transmission. I gave you an example abhi hi कि सोशलाइजेशन जो है वो एक्सपोज करता है बच्चों को सोशल नॉर्म्स जो है उनकी सोसाइटी के, कल्चरल वैल्यूज जो है, ट्रेडिशन जो है उनकी सोसाइटी के, उनको वो जानते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू. जैसे कि कोई फेस्टिवल पे पूजा करनी है, दिवाली पे नए कपड़े पहनने हैं, होली पे कलर लगाना है, मंदिर में चप्पल उतार के जाना है. ऑल ऑफ दीज कल्चरल थिंग्स दे लर्न थ्रू सोशलाइजेशन. पहली बार मम्मी ने ही तो बताया होगा या किसी फैमिली मेंबर ने ही तो बताया होगा कि वी आर एंटरिंग टू द टेम्पल, टेक आउट योर स्लीपर्स. देन ओनली ये एक पार्ट था सोशलाइजेशन का. उस दिन से बच्चा सीख गया, ओके नाउ आई एम एंटरिंग टू द टेम्पल, आई विल टेक आउट माई slippers. So this is how socialization helps in cultural transmission. आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताता है. जैसे बोला जाता है ना कि आप एक सोशल गैदरिंग में हैं, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको प्रॉपरली बैठना है, यू नो, यू कैन नॉट ड्रेस लाइक दिस, आपको ऐसे ही ड्रेस करना है, कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ पे कैसे बोलना है. ऑल ऑफ दिस वी लर्न थ्रू सोशलाइजेशन. द नेक्स्ट पॉइंट सेज इमोशनल डेवलपमेंट. Interactions with caregivers, peers, and other social agents during socialization help children develop emotional intelligence, resilience, and coping strategies. देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जिसको अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन में नेविगेट करना. अगर किसी फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो चाइल्ड है, he or she is very much emotionally dependent on the parent, तो it becomes difficult for it. अगर थोड़ा सा भी बच्चे को स्पेस दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि कैसे किसी चीज को राइट मोमेंट पे कैसे टैकल करना है, उसको काउंसलिंग दी जाती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, देन द इमोशनल डेवलपमेंट इज हाईएस्ट. They learn to regulate their emotions, understand the emotions of others, and form meaningful relationships. जब इंटरेक्शन होता है उसी के थ्रू तो हम समझेंगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, दूसरों के इमोशंस की भी इंपॉर्टेंस समझेंगे, सेल्फ सेंट्रिक नहीं रहेंगे. ऑल ऑफ दीज आर लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. Now, the next point says language and cognitive development. This I told you, ये अभी मैंने आपको बताया कि how actually the first language or the mother tongue is very easily learned by all of us. We don't even remember कि हमने कोई extra efforts डाले हो अपनी primary language जो है उसको सीखने के लिए, right? Whereas अगर हम कोई second language सीख रहे हैं तो उसके लिए we are supposed to put efforts, because socialization हमारा ऐसा है, हमको हर चीज हम बोलने से पहले उस चीज को सुन रहे हैं, and that is how through socialization we develop language. Right? So socialization provides rich opportunities for language acquisition and cognitive development. So फॉर एग्जाम्पल स्कूल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से होता है. राइट?
सो थ्रू कॉन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, कोई प्रोजेक्ट दे दिया टीचर ने कि स्टूडेंट्स को टॉपिक दे दिया कि अब आपको इस टॉपिक पे यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट, 4-5 स्टूडेंट्स को साथ में बना दिया कि ये आपका ग्रुप है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट नाउ। सो दे विल लर्न अ फ्यू थिंग्स कि कम सामान में कैसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है दो लोगों के बातों में कि ये नहीं करेंगे ये करेंगे, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। सो through these things cognitive development takes place, right? So they actually learn so many things, and they also learn problem solving abilities through these processes, right? Okay, the next point says preparation for adult roles. वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये जो प्रेपरेशन हो, ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसके थ्रू जो बच्चा है वो प्रिपेयर हो रहा है to acquire the best knowledge, right? So this is how actually the child is preparing for its adulthood through the process of socialization. So future में the child will become a better citizen or a better community member when he or she has better understanding of the area where he lives or the community or the members of his community. He will be able to serve them better if the socialization is top notch. Now, there are a few agents of socialization, like family is the primary agent of socialization, क्योंकि पहले बच्चा जब फैमिली में होता है वो हर चीज अपनी फैमिली से सीखता है, and then after that comes school. So I'll give you an example. बच्चा हर बात मम्मी पापा की मानता है, पर एक टाइम ऐसा आता है जब वो स्कूल जाता है एंड व्हेन द टीचर सेज कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, तो बच्चे को लगता है कि ओ मम्मी ने ये बताया था, टीचर ने ये बताया। तो वो एक पॉइंट होता है जहां पे द स्टूडेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टीचर। सो घर पे जाके ही और शी विल से कि नो मॉम, दिस इज नॉट राइट, माय टीचर इज सेइंग दिस इज लाइक दैट। So that is how actually families, schools, and these different agents are helping in the socialization of the child. And school is also called as miniature of society. So miniature of society means because before going to school the child is almost restricted to the family only, right? And when he or she is going to the school, वो different cultures के peers से मिलेगा, teacher different होगी, है ना? There are so many things which will be different and new for the child. So basically एक ऐसा environment मिलेगा child को जो अभी तक नहीं था, एक more open and diverse environment मिलेगा. So that is why we also call school as miniature of society, because school helps in preparation for the bigger picture. स्टूडेंट जब स्कूल जाता है तो वो बहुत कुछ सीखता है सोसाइटी के बारे में, कैसे रेस्पेक्ट करना है डाइवर्सिटी को, डिफरेंट कल्चर्स को, कैसे कोऑर्डिनेट करना है बड़े ग्रुप्स में, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. देन द अदर socializing agent is media. So exposure to societal norms, values, behaviors through television, internet, social media. एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ. अभी ये थोड़ा नहीं है, but there was a time when it was called that fairness is equal to beauty, okay, which is actually the colonial hangover in India. So there was a time, in fact अभी भी है, but अभी थोड़ा ये कम हो रहा है. So fairness से obsession इतना था कि if somebody is fair, she or he, mostly she, is beautiful. And if somebody is of a darker skin, then she probably, and sometimes he also, not beautiful and handsome. So these stereotypes which are made by the media or the society, they also, kind of bring uh, prejudices in the mind of children through the process of socialization. Now that we understand that it is actually racism. So अभी सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो गया है. तो जो लड़का या लड़की छोटे एज में समझता होगा कि फेयरनेस इज इक्विवेलेंट टू ब्यूटी, अभी शायद थ्रू socialization at this point, through awareness, he or she now understands that
कि नहीं, fairness is not equivalent to beauty. Now they have changed their perspective. So ऐसे कह सकते हैं कि socialization एक lifelong process भी है. ओके क्यों? क्योंकि एक समय पे उसको लगता था जब वो छोटा था कि ओके फेयरनेस इज इक्विवेलेंट टू ब्यूटी, बट एज ही और शी ग्रोज different awareness level comes and more exposure comes within the society, then they understood कि no, ये equivalent नहीं है. तो एक mindset change हुआ. कैसे change हुआ? Socialization. So primary socialization जो हुआ था, that is now changed. The mentality is changed again through socialization, and that is why we call socialization is a lifelong process. Okay, there have been questions on this. Now I have a small question for you. Let's see. Let's see if you people can answer this one, just to gauge your understanding only. Okay. So the question is about which of the following statements best describes the role of parents and teachers in the socialization of children? Option A says parents primarily influence academic achievement while teachers focus on social skills. Option B says teachers are responsible for instilling cultural values while parents focus on academic success. Option C, parents and teachers both play crucial roles in teaching social norms, values, and behavior. Option D, teachers have a greater impact on socialization compared to parents due to their authority in the school. Now you have to tell me which answer will be correct. Now we can discuss all these, but for now I want you to give me the correct answer, which is actually, you can actually pause the video and see which options according to you is correct. C is actually the correct one, because parents and teacher both are very important in the process of socialization, right? Parents are the primary source of socialization when the child is born. सबसे पहला इंटरेक्शन ही बच्चे का पेरेंट्स से होता है. टीचर का तो 3-4 साल बाद होता है इंटरेक्शन, राइट? Okay, so in the next lecture what we are going to talk about is we are going to see socialization theories. Some theories, actually we are going to see more theories, but कुछ theory जो हम देखेंगे उनमें से कुछ है social learning theory, Bandura की, cognitive development theory, Piaget, attachment theory, Bowlby, and then we are also going to talk about the role of pedagogy in socialization, how pedagogy is helping uh, in the process of socialization. That also we are going to learn, because see, at the end of the day, the subjects or the topics or the disciplines that we are in, that impacts a lot. Okay, so बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसकी वजह से उनका जो सोशलाइजेशन है वो इम्पैक्ट होता है, एंड दे हैव अ सर्टेन way of thinking. Understood? So this was it for today. I'll see you soon in the next lecture. Till then, please keep studying and work hard. Thank you so much, everyone.